हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट द आर्ट। सो आज हम लोग जो पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा खास पोर्ट्रेट होने वाली है। और आज हम लोग आर्टलाइन के पेंसिल्स यूज़ करेंगे जो मेरे पास है HB, 4B, 6B, 8B और 10B के ग्रेड में। 10B के ग्रेड मैंने इतने ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। सो चलो आज स्टार्ट करते हैं। और ये जो पोर्ट्रेट हम लोग बनाने वाले उसकी इमेज मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे डाल दी है। और पहले ही मैंने एक 2H के पेंसिल से, मेरे पास जो अवेलेबल थी उसके पेंसिल से मैंने एक आउटलाइन सा क्रिएट कर लिया है। और देन हम लोग अभी शेडिंग करने वाले हैं इसमें। सो लेट्स गेट जंप्ड इनटू द वीडियो। सो यहाँ पहले मेरे पास जो सबसे डार्केस्ट वैल्यू थी 10B, उससे मैंने आईज़ की जो डार्क पोर्शंस है वो मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ ब्लेंडिंग के लिए मैंने यूज़ किया है ब्लेंडिंग स्टम्प्स। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प्स अवेलेबल ना हो देन आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर कॉटन बॉल यूज़ कर सकते हैं।
क्लोथ को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल्स के यूज़ किए हैं, और जो मेरे पास चारकोल पेंसिल अवेलेबल था, जैसे जनरल के पेंसिल मैंने यूज़ किए हैं और कैमलिन के पेंसिल भी। अगर आपके पास कोई भी चारकोल पेंसिल ना हो तो देन आपके पास जो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट वैल्यू की पेंसिल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। This is our final result. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको इस रिलेटेड आर्ट वीडियोस चाहिए हो सो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।